Hi, welcome to all. So today we are going to start the lecture on writing. So writing task 2 we talk about today. So the question is on crime. I try my best to make you understand the question first of all. Thereafter vocabulary also, paraphrasing and other parameters of grammar too. I hope listen, and if you are repeating for writing or repeating paper IELTS and you are unable to score 5 point or 6 only, so what I convey message today itself, understand that message, what is going to be taught and how the marks can be achieved. See, when we talk about writing, what is the taste of the examiner? What is the expectation of the examiner? Examiner wants that your writing must not be copied. Examiner wants that your thought must be your own. Your examples, that must be your own. Of course, examiner wants how you are linking your essay and what kind of a grammar or parameter of grammars that you are using in your writing. The first question is, many people think that having one single fixed punishment for all crimes would be more effective. What are the advantages and disadvantages of having a fixed punishment? No, I advise all the students who are listening, notify all the important words, what I do convey now, note down the vocabulary, whatever it is important for you. Now see, many people think that having single fixed punishment for all crimes would be more effective. Single fixed punishment means common punishment for all criminals. That would be more effective. What are the advantages and disadvantages of having a fixed punishment? So the flow of the question is, would be more effective, means fixed punishment would be more effective. Now, this is from many people to more effective, it is a statement. The question on the statement is, what are the advantages and disadvantages? So the rule of the introduction is that when you are making introduction, the rule is whatever the statement is, like the statement is many people up to effective. Paraphrase this statement. Paraphrase means change the words of the statement in your own language. So when you are paraphrasing the statement, do not copy the words from the question itself, right? Now look at the introduction, like from here. One of the highly controversial issue, whether the judiciary should adopt the common punishment for all crimes or nature of the crime should be observed. Means it is a highly controversial issue. You can use these red highlighted words, means you can use such vocabulary in your answer. Highly controversial issue, whether the judiciary, अब punishment कौन देगा? Judiciary. So judiciary should adopt the common punishment for all crimes or nature of the crime should be observed. Now see here, next one is, what are the advantages and disadvantages? Now in order to protect the society, it has more pros. उसने कहा more effective है, हाँ जी हमने कह दिया more pros हैं. किसके लिए? To protect the society. Means I have mentioned here the topic sentence that if it has advantages, then what is the main advantage? That is, in order to protect the society. It has more pros, comma. But its drawbacks are worth considering too. Now see from this line, but to, when you get question related to advantages and disadvantages, you can use this line, but its drawback are worth considering too. So do not end the point up to pros. Try to write this line, but its drawbacks are worth considering too. So note down this point that worth considering, protect society, highly controversial issues. So try to use these kind of words in your writing. Those who have a weak introduction, those who are unable to paraphrase, भाई जो paraphrase नहीं कर पाते हैं और उनको मुश्किल लग रहा है, I advise them
to use such language, read it, understand, and try to write introduction. जिस तरीके से मैं इंट्रोडक्शन को समझाया, पहले इंट्रोडक्शन को बनाना सीखें कि कैसे वर्ड्स को पॉलिश करना है, किस तरह से थोड़े से वर्ड्स को मुश्किल करना है, कैसी वोकेबुलरी डालनी है, कैसे कनेक्टर यूज करने हैं. On the very first step, you look at whether मैंने यूज किया, उसके बाद और यूज किया, उसके बाद मैंने but का यूज किया in order to use किया. This is how the words can be linked. So linking is very important here. Vocabulary is important, grammar is important. So do not stress only on the idea or do not stress only on the grammar. Right? Or if you have another way of using paraphrasing, you can use it. But understanding is when you are writing advantages and disadvantages, all the students are requested, do not write these lines. There are many advantages and disadvantages of having a fixed punishment. Do not write there are many pros and cons which are discussed in the below given paragraph. So these lines have no meaning. It means you need to understand what could be the topic sentence. So we are stressing on the advantages. So I have written the protect the society. Hope introduction is clear. So I'm moving to the next one topic. अब मुझे next BP1, BP2. Introduction must not be more than 35 words. So आपका message convey होना चाहिए, useless introduction नहीं बनानी है. So when I talk about the advantages and disadvantages, I'll write advantages and disadvantages. Advantages in PP1 paragraph, disadvantages in PP second paragraph. Now see, now this is second paragraph. अगर आप रेड वाले शब्द देखें तो these are the vocabulary words कि कैसे vocabulary को बीच में यूज किया गया है. जो डार्क ब्लू है it shows that how linking is used. अगर आप देखें तो कहीं पे भी fan voice का यूज ज्यादा नहीं हुआ. Fan voice means for, and, nor, but, or, yet, so. So try to use the complex structure in your language, especially in BP paragraph. Now this BP paragraph is divided into 3 parameters. First one is description, then example, then result. हर body paragraph के अंदर 3 चीजें होनी जरूरी हैं, explanation, example and result. और उसके साथ आपका tense passive voice, आपकी vocabulary, आपकी linking, आपका thought. अब ये thought process क्या है? उसने पूछा कि fixed जो assessment है, fixed punishment है जो, वो फायदे क्या हैं उसके? अगर फिक्स्ड असेसमेंट होगी तो क्या क्या फायदे हैं? सो आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द पैराग्राफ. नाउ दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट द पैराग्राफ बाय दिस फ्रेज, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन. इसका मतलब है ये एक्नॉलेज्ड है, ये ऑब्वियसली सही है बताते हुए कि दैट सेम सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब यहाँ पे वर्ड ऑफ नहीं है, वर्ड्स नहीं है, सेंटेंस का मतलब है यहाँ पे पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट. So sentence means not only the words, it means here the sentence is death penalty or capital punishment or imprisonment. It is pertinent to mention that same sentence मतलब सबके लिए common सजा, to every offender, हर कसूरवार, to every offender is the need of our to have a safe society. मतलब ये बताते हुए कहना है कि अगर सम सेम सेंटेंस दें हर ऑफेंडर को, वो आजकल की जरूरत है टू हैव अ सेफ सोसाइटी. क्यों, वो किस तरह, उसके रीजंस क्या हैं? सो दीज 3 फर्स्ट लाइंस आर कॉल्ड द थीसिस स्टेटमेंट ऑन व्हिच यू आर गोइंग टू राइट. अब बार बार ऑफेंडर शब्द ना आए तो उसके लिए मैंने अलग अलग वोकेबुलरी यूज की है, कभी कल्प्रिट यूज किया है, कभी एक्यूज यूज किया है. सो यू मस्ट ऑब्जर्व दैट हाउ डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड. एक शब्द को मैंने वोकेबुलरी खास करके दोबारा रिपीट नहीं की है. दिस इज व्हाट हैज टू बी विजुअलाइज्ड. Now talking about, it is pertinent to mention that same sentence to every offender is a need of an hour to have a safe society. ये thesis statement है. अब रीजनिंग स्टार्ट हो रही है कि क्यों देनी चाहिए इसे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट सेव्स द टाइम एंड मनी ऑफ द जुडिशरी टू डिक्लेयर द जजमेंट. मीन्स अगर जजमेंट देनी है तो उसके लिए टाइम भी सेव है और मनी भी सेव है. कहने का मतलब एक जुडिशरी अगर 10 साल किसी केस को लगाती है तो इसका मतलब वहां पे टाइम भी वेस्ट हो रहा है और मनी भी वेस्ट हो रही है. अगर एक ही सजा हो गई तो इसका मतलब टाइम भी सेव होगा,
दूसरे रिजल्ट्स भी जल्दी आएंगे और पैसा भी सेव होगा बार बार किसी चीज के ऊपर खर्चने के लिए. इवन कल्प्रिट्स गेट पेनलाइज सोन. इवन कल्प्रिट्स गेट पेनलाइज सोन मतलब कल्प्रिट्स को भी सजा जल्दी मिलेगी इससे. इट मींस जस्टिस जो है लोगों को जो है वो जल्दी मिलेगा. जस्टिस जल्दी मिलने का मतलब है उनको अपना राइट मिलना. सो दिस इज व्हाई द फर्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि क्यों देना चाहिए कॉमन पनिशमेंट. बिकॉज ऑफ व्हाट, सेव टाइम एंड मनी. दिस इज द फर्स्ट रीजन. इन दिस वे डिले प्रोसेस डिक्लाइंस. इससे क्या होगा, जो डिले प्रोसेस है वो डिक्लाइन होगा एंड जस्टिस इज गिवन टू एक्यूज ऑन टाइम. जो कसूरवार है उसको जो जस्टिस है वो जल्दी मिलेगा, एक्यूज को, कसूरवार को. इट मीन्स द फर्स्ट पॉइंट एंड्स ओवर हियर. अब इसमें क्या बात है जो समझनी है. अगर आप देखें फर्स्ट एंड फोरमोस्ट से, ये पहले रीजन है इसलिए फर्स्टली की जगह पर आप फर्स्ट एंड फोरमोस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन कोमा लगाना नहीं बोलना है बीच में. इट सेव्स द टाइम एंड मनी. अब मैंने अगर सेव्स एंड टाइम है ना तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की है इवन लगाकर. फिर उसके बाद इन दिस वे डिले प्रोसेस डिक्लाइंस एंड जस्टिस. मैंने प्रॉपर उसको एक्सप्लेन किया, उससे क्या होगा वो बताया, उससे क्या चीज का फायदा होगा जुडिशियरी को भी और एक्यूज्ड को भी और जिसको जस्टिस मिलना चाहिए उसको भी. सो दिस इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ इट. इट मींस दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ इट. अब मैं इसके साथ एक स्पोर्टिंग व्यू भी डाल रहा हूं. अब किसी भी पॉइंट को स्पोर्टिंग व्यू डालने के लिए, सपोर्टिंग पॉइंट डालने के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, अनदर कॉजेंट रीजन बिहाइंड द फिक्स्ड पनिशमेंट. अब ये जो है फिक्स्ड पनिशमेंट, कोई भी पैराग्राफ आ जाए आपको तो यू कैन चेंज दिस वर्ड, अदरवाइज दिस फ्रेज अनदर कॉजेंट रीजन बिहाइंड द, ये सेम रहेगा. So fixed punishment is to make culprit think twice before doing any crime. मतलब अगर वो फिक्स्ड होगी पनिशमेंट तो इसका मतलब वो दो बार सोचेगा क्राइम करने के लिए. By this they would realize punishment is going to be strict. मतलब उसको पता होगा कि मैं अगर गलती करूंगा तो मुझे एक तो पनिशमेंट जल्दी मिलेगी और उसके बाद उसको स्ट्रिक्ट भी हो सकती है, तो वो क्राइम करने से पहले सोचेगा. इससे क्या होगा, सोसाइटी फिर सेफ बनेगी. सो दिस इज व्हाट माय थॉट इज टू राइट इट. One good illustration. Most of the students they write like this, for example, for illustration, to illustrate, to example. आप थोड़ा सा डिफरेंट हटकर भी अपनी एग्जाम्पल को स्टेट कर सकते हैं इन दिस वे. वन गुड इलस्ट्रेशन कैन बी सीन इन दुबई. ये एग्जाम्पल है. नाउ सी, अब यहां तक एक्सप्लेन किया मैंने अच्छे से 60 वर्ड्स के अंदर या 70 वर्ड्स के अंदर. Now another one is that how to give example. One good illustration can be seen. अब ऐसे words को आपने चुराना है and you use these kind of words in your language. So when you start writing your essay, try to use these red and blue words. One good illustration can be seen in Dubai. It is connected by where rate of crime declined to minimum in last 5 years. Means Dubai is one of the country where justice is given within a days. So that's why how this society is safe. अब result क्या है? Hence, it is a wise idea to have common punishable act. अब देखो मैंने पहले same use किया, फिर उसके बाद मैंने common use किया. Fixed की जगह पर मैं regulate भी use कर सकता हूँ, common use कर सकता हूँ, right? Same sentence use कर सकता हूँ. So these are the different words that how it can be used in your language. अब पहले पनिशमेंट यूज किया, पनिश यूज किया, पेनलाइज यूज कर सकते हैं, पनिशनेबल एक्ट यूज कर सकते हैं. दिस इज हाउ आई हैव यूज्ड द वर्ड. सो ट्राई वन वर्ड एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब. सो इस तरह के वर्ड्स को यूज करना सीखें कि कैसे यूज किया जाता है. सो रिजल्ट इज हेंस इट इज अ वाइज आइडिया टू हैव कॉमन पनिशनेबल एक्ट फॉर ऑल द क्रिमिनल्स. सो दिस इज हाउ द रीजनिंग इज एक्सप्लेन्ड, हाउ एग्जांपल इज सॉल्व्ड एंड हाउ द रिजल्ट इज गिवन. अब इसको इंप्रूव करने का तरीका क्या है? What is way? I have made you understood the whole passage. I am not saying copy or learn. I am saying read words, the words which are marked by the red pen, the words which are marked by the blue pen. इनको नोट कर लें साथ साथ. आपने इन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज के अंदर थॉट प्रोसेस ये लें और अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको यूज करें. डेफिनेटली इट विल बी इम्प्रूव्ड. हो ही नहीं सकता that you won't be able to improve by this. So means thought process भी आपने ले लिया, मेरा language के words ले लिए and try to use in your language now. So this is what is the way of it. And do not be in a hurry.
एक पैराग्राफ बनाओ इंट्रोडक्शन, उसको चेक करो, BP1 बनाइए, उसको चेक करें दैट इज राइट और रॉन्ग, फिर थर्ड बनाएं. So when you write an essay, do not be in a pell-mell, do not be in a hurry. Slow process, work on accuracy, do not work on time management. Time management, if you are a new student, if your writing is weak, I advise you to stress on accuracy, one by one paragraph and move ahead. Hope it is clear. Now I'm moving to second one. See, it's a BP1, BP2 paragraph, BP second. On the downside, अब देखिए मैंने यूज किया वर्ड रेगुलर पेनलाइजिंग. अब मैंने कॉमन नहीं यूज किया यहाँ पर, सेम नहीं यूज किया यहाँ पर, राइट. आई हैव यूज्ड द वर्ड रेगुलर पेनलाइजिंग, मतलब पेनलाइज मीन सजा देना. ऑन द डाउन साइड, अब यहाँ पे आपको इस वर्ड को देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, उसकी जगह पर लिख सकते हैं. डोंट यूज दिस वर्ड मोर देयर आर मेनी, देयर आर मेनी. सो ट्राई टू अवॉइड एंड यू कैन राइट दिस वर्ड ऑन द डाउन साइड. अब इस तरह का वर्ड आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें. Regular penalizing, note it down. Now regular penalize to convicts. Convicts means दोषी. पहले हमने यूज किया accuse, फिर यूज किया हमने वहां पे offenders. Now here the word is used convicts, means दोषी. On the downside, regular penalizing to convicts may have, हो सकता है injustice, because criminals are not born. Sometimes circumstances and impact of the pessimistic people. Pessimistic people का मतलब है negative approach people made them to do so. Means अगर regular penalize करते हैं convicts को, हो सकता है कि उनसे injustice हो, मतलब अन्याय हो, क्योंकि criminals जो हैं वो जन्म से पैदा नहीं होते हैं. Sometimes हालात जो है उनको criminal बना देती है, या impact, या society के अंदर negative लोग हैं उनको ऐसा बना देते हैं, पर वो जन्म से criminals नहीं है. अगर ऐसा होता है, if it happens, see how the connector is used. if अगर ऐसा होता है, मीन्स अगर माइनर क्राइम करते हैं और उनको रेगुलर जस्टिस नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली हार्ड पनिशमेंट मिलेगी माइनर क्राइम के लिए. अगर ऐसा होता है, इफ इट हैपेंस, इट मे पॉसिबल, ये हो सकता है शायद, कि माइनर क्राइम वुड बी चेंज टू द मेजर इन द लॉन्गर रन. मतलब एक अगर माइनर क्राइम है तो वो आगे जाके बड़ा क्राइम बन सकता है, राइट. इसलिए अगर रेगुलर पेनलाइज करना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम है उनके लिए जो माइनर क्राइम्स करते हैं, उनके लिए इनजस्टिस है. दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दिस इज अ डिसएडवांटेज. समटाइम्स ऐसा भी पॉसिबल है. ऑफेंस मतलब क्राइम. अब ये छोटा मोटा ऑफेंस है, लाइक ब्लैकमेलिंग करना, थेफ्ट करना, ये एनी माइनर एक्ट इज परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस. डज इट जस्टिफाई? नई चीज सीखने वाली क्या है यहाँ पर. देखिए हाउ आई हैव टर्न इनटू अ क्वेश्चन. समटाइम्स offense like blackmailing, theft, or any minor act is performed because of circumstances. Does it justify then to give strong punishment? अब ये क्वेश्चन बना सकते हैं बीच में कि अगर इस तरह के एक्ट होते हैं तो क्या ये जस्टिफाई है पनिशमेंट देना. Now most of the students don't know that how the questions can be made. So अगर क्वेश्चन वो कंट्रोवर्शियल के ऊपर है, अगर वो क्वेश्चन एग्री डिसएग्री के ऊपर है, आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो. शुड से स्टार्ट कर सकते हैं, डू डज से स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज हाउ द लैंग्वेज कैन बी टर्न. सो द न्यू थिंग टू गेट अ बेटर बैंड. डज इट जस्टिफाई देन टू गिव स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट? उसका आंसर दिया है, सर्टेनली. देयर इज नेसेसिटी टू पॉन्डर ओवर. यस, देयर इज अ नेसेसिटी, जरूरत है. पॉन्डर ओवर का मतलब है सोचना, विचार करना, थिंक ओवर. सो देयर इज नेसेसिटी टू पॉन्डर ऑफ दिस सिचुएशन रेदर टू पेनलाइज. ऊपर देखिए पेनलाइजिंग था, नीचे देखिए पेनलाइज है. सो हाउ द वर्ड्स कैन बी यूज्ड. टू पॉन्डर ओवर द सिचुएशन रेदर, कनेक्टर यूज हो गया. टू पेनलाइज कॉमनली. कॉमन वर्ड था, मैंने अब कॉमनली एडवर्ब फॉर्म में ले आया वर्ड को. पहले हमने कॉमन यूज किया हुआ था, अब मैं ले आया एडवर्ब फॉर्म के अंदर. टू पेनलाइज कॉमनली मीन्स is a necessity to ponder over this situation rather to penalize commonly, unless, नहीं तो faith over judiciary system would be disappear. कहने का मतलब है अगर हमें इस चीज के ऊपर सोचने की जरूरत है, rather than को सबको हम कॉमन पनिशमेंट देते जाएं. अगर कॉमन देते रहेंगे क्या होगा? faith over judiciary system would be disappeared. ये हो सकता है कि जो लोगों का विश्वास है वही खत्म हो जाए, वही अलोप हो जाए. So that's the meaning of it, that how the BP paragraph 2 that is designed for you. Hope it is clear and how the words can be used. The new thing that is
to be learned, that is how the question form can be made in your answer and how answer can be given by certainly there is necessity to ponder over. So इस तरह से अपना आंसर बना सकते हैं, no problem at all. और जरूरी नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है वो हैंस के ऊपर ही हो, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर जो है वो हैंस और दस के ऊपर हो. You can also give the result in the form of unless. ऐसे भी दे सकते हैं, unless faith over judiciary system would be disappear. So it never so कि आपको रिजल्ट के लिए 10 से स्टार्ट करना है या हैंस से. Yes, it is there, but you can also use in this form. The whole way of my learning, the whole way that I'm telling you right now is just only to shape your language. You are writing good, but how to shape your answer, that is what I taught. Now, hope second paragraph is clear. If it's clear to all, do write please yes or no. Do write please yes or no. I'm waiting for your answer. If you're understood, that's good. Blackmailing नहीं समझ आया? Okay, I'll make you understand again. Blackmailing, the question is asked from me कि अगर ये छोटे क्राइम हैं, जैसे कि the word is written here, sometimes crime जो है like blackmailing, theft or any minor act is performed. मैं इस तरह के परफॉर्म्स एक्ट हैं जो ब्लैकमेलिंग है, थेफ्ट है, वो हालातों की वजह से होते हैं ये छोटे छोटे जो क्राइम है. और क्या ये जस्टिफाई है कि उनको हम स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दे दें? तो मैंने कहा सर्टनली. ये सोचने की जरूरत है कि ऐसी सिचुएशन अगर हो गई, कॉमनली सबको पनिशमेंट स्ट्रॉन्ग मिलती गई, तो जस्टिस ही खत्म हो जाएगा, जस्टिस ही डिसअपियर हो जाएगा. इट मींस जो जस्टिस है, जो जजमेंट है, वो नेचर ऑफ द क्राइम के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, ना कि सबको एक जैसी होनी चाहिए. इसमें ये क्या है कि अगर ये हो गया कि सबको माइनर क्राइम और मेजर क्राइम जिसने किया है सबको एक जैसी सजा मिल जाए, तो जिसने छोटे क्राइम किए हैं वो आगे जाके बड़े क्राइम करेंगे. सो इसलिए डिसएडवांटेज हुआ. इसलिए सोचने की जरूरत है कि इस तरह की जजमेंट नहीं देनी चाहिए कि सबको एक जैसा ही होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड ब्लैकमेलिंग. मींस किसी को हम ब्लैकमेल करते हैं, दैट इज ब्लैकमेलिंग. राइट? चोरी डकैती करते हैं, दैट इज थेफ्ट. माइनर एक्ट और छोटे मोटे कोई चोरी डकैती हो सकती है, दैट इज माइनर एक्ट. होप इट इज क्लियर. नाउ सी द कंक्लूजन इज, so it is talking about the two things, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, advantage disadvantage पूछा है, तो of course you started from although. So in a conclusion, I advise all the students, you can use to conclude, you can use in a conclusion. Please do not use the word in a nutshell. Do not use the word to round off the discussion. So simple words, you will be given the marks for it, don't worry at all. Right? In a conclusion, although universal punishment in any nation, universal मतलब एक जैसी सजा, punishment in any nation may safeguard the community. अब ये जो पहला पॉइंट है कंक्लूजन का, learn it. हर पहला पॉइंट कंक्लूजन के अंदर इट इज अ रीफ्रेजिंग ऑफ द स्टेटमेंट. जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी है उसको फिर रीफ्रेज कर दें बाय यूजिंग द वर्ड ऑल्दो. सो ऑल्दो यूनिवर्सल पनिशमेंट इन एनी नेशन में सेफगार्ड मतलब टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी, पर however considering the circumstances behind the crime is paramount. पर जरूरत ये है, ठीक है उसकी बात की यूनिवर्सल पनिशमेंट किसी नेशन के अंदर सेफगार्ड हो सकती है, पर considering, now how, after however, see how I use the word considering means gerund it is called. ये gerund sentences हैं, verb की first form लगाए, ing लगाओ and you can start the line. So considering the circumstances behind the crime is paramount means important in order to reach a fair justice in a courtroom. In order to use किया है reach a fair justice, कि एक अच्छा फेयर जस्टिस कोर्टरूम के अंदर देने के लिए जरूरत है कि हम सर्कमस्टांसेस को, क्राइम के पीछे जो है उसको बारे में सोचें. सो दिस इज हाउ द आंसर इज मेड. होप द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग, हु आर paying attention on the lecture, I request everybody, red line words, blue words, note it down. Those words try to use in your language to increase your vocabulary, to increase your sentence formation as well. अब अगर आपने ध्यान से सुन लिया और इसको समझ लिया कि this is the way of making sentences, you can better score, right? So definitely I will give you one lecture on sentence formation as well, right? So thanks for today itself and see you in the next lecture. Bye bye.
hope that if my lecture is fruitful to you all, and it would be my privilege if I could do something in your writing and make your writing best. So I always try to teach you something new in every lecture. Thank you, please. Take care. Bye bye. So, bye bye. Take care.